Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on zinc. MCX zinc price is currently moving in strong downtrend, adhering to falling channel and forming a pattern of lower highs, lower low. The base metal price closed negative, decline of minus 1.50% in today's trading session. Zinc price has closed below the critical 200-day exponential moving average, signal a bearish trend. The key support level is at Rs 265 level and breach below could trigger further selling pressure for downside target till Rs 262 and Rs 255 level in near term. On the upside, key resistance hold at Rs 270 level. The negative crossover in the MACD positioning below the center line indicate bearish momentum in the upcoming trading sessions. थैंक यू। नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है जिंक। एमसीएक्स जिंक प्राइस फॉलिंग चैनल में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। जिंक प्राइस ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और माइनस 1.50% नेगेटिव क्लोज दिया है। जिंक प्राइस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट Rs 265 लेवल पर है। अगर ब्रेक करता है तो Rs 262 और Rs 255 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस Rs 270 लेवल पर है। MACD इंडिकेटर ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है और सेंटर लाइन के नीचे मूव कर रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेंड बेरिश है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.